Namaskar. Good evening. Welcome. Welcome to all the regular members, all the regular and the guests today. Welcome to DHV Spirituality and Healing Meet. And today it's a Wednesday meet. And we are here for the session on what is the topic today? Emotion of love and fear. Yes, the emotion of love and fear. That is what we are looking at. But today being yesterday being the very important day of mental health day. So today we are actually going to discuss a lot on the well-being of the mind. That means the mental health. We're going to talk of mental and emotional health, mind, body, and we're going to see how we can actually take care of our mind from controlling our life. Rather, we should be controlling the mind rather than the other way around. So we'll be looking at a few tips. And today we are lucky that Sanjeev has come here after a long break. 2-3 breaks time. He had gone to Vipassana, and then so he is here, and we all know that he is a expert in mind as a mind coach. So we will have his expertise in this field of mental health, right? But yes, just to have a quick recap on what we have done so far. In the emotional health, we talked of emotion, emotional intelligence, we talked of love being the basic essence, the first and the most foremost emotion that any human being will experience is love. So we talked a lot about love, and we also saw how we are expressing love in different flavors, because we are a soul playing different roles, and in every role we have a different flavor of love that we experience and express. So emotional intelligence basically means we are experiencing and expressing the emotions in a natural way. Natural way means you are fulfilling the purpose of that emotion. So that is a quick recap of what all we have done so far. So everybody okay with this? Okay. So a quick QA session. So I will start the question with what? That is what I have learned in the camp. Ask all the questions starting with what. So what is emotion? If I ask, what will be the answer? What is emotion? Anybody? Anybody wants to say that? What is emotion? Hey, come on. We have done a lot of discussions on emotions, right? What is emotion? The way of feeling. Emotion and feeling are different. Gunjan, what is emotion? अभी 3 दिन तो हम करके आए ना. Yes, Rupa, go ahead. The reaction of the situation. वो तो response हो गया. Reflects kind of a reaction of a situation. वो तो reaction या response है. I think Praveen sir was right. When we ask what, we are totally going everywhere else, but we are not looking at the actual. We are not looking at the actual answer. So what is emotion? If you break emotion, emotion is what? Energy in motion. So the power behind your action is the emotion. Okay, so we saw this now. Emotion is energy in motion, right? And most primary emotion we saw that for human being is love. Now, what is emotional intelligence? I actually done that as a recap. Emotional intelligence is what? When you are operating from your emotional center. That is your emotional intelligence. So you should know your emotional center. Like I shared in the last session, emotional center can be happy and peaceful. So that is my stable center. So whatever happens, if I am stable, I will be operating with a happy and peaceful kind of a emotional center. Any situation comes, बहुत अच्छा situation आया, I will sway on one side. वाह, मजा आ गया, great, and then I come back to normal. Pain हुआ तो, ouch, and then come back. जो भी कहना आहा करनी है तो आहा करो, वाह करनी है तो वाह करो, और वापस आ जाओ. That is your emotional center. This is emotional intelligence. Then you respond. Then you respond to the situation. Correct? So, Rupa, the reaction will come later. First, your emotion has to be processed inside. And that has to come from your emotional center. That is when we say you are sthit pragya, or you are in your emotional center. You have the wisdom. You have the wisdom to experience and express your emotions in a natural way. And that is fulfilling the purpose of that emotion. अब लव का पर्पस क्या है? हमने क्या देखा? लव का पर्पस क्या है? लव इज अ स्टेट ऑफ बीइंग. लव इज अ स्टेट ऑफ बीइंग. आवर नेचुरल एसेंस, हमारा बेसिक नेचर है लव. So we are experiencing and expressing love in different forms, in different roles, with different people. Clear?
So far clear? All right, good. So now we are going to look at, and also we also saw in the last session a couple of more things which were very, very important. So let me check whether it landed correctly or not, though we discussed it in the last session. Okay. So one thing was soul is playing different roles, and in each role with every person, we will experience a different flavor of love, the emotion. Clear? That is right. Second, we can experience any emotion on demand at will. Our chit, जो हमारा चित है, it is so wonderful. It is so kind of an infinite potential that you can actually experience and express any kind of emotion on demand at will, irrespective of the situation. How many of you can connect with this? Think of a great actor, Amitabh Bachchan, my favorite. Shooting के लिए आता है and then he says, आज एक death scene करना है. He is ready. Without any glycerin and all, he can cry and do that death scene. Correct? What is the next scene after 10 minutes? He has to do a angry man's role, fight scene. So he emotes the anger. So a great actor can emote any emotion and then come back to his emotional center. Basic. अपने रोल में वापस अमिताभ बन जाएगा तो वो फिर वीरू नहीं रहा या जय नहीं रहा या विजय नहीं रहा. करेक्ट? डॉन नहीं रहा. You understand the point? So when you are operating from your emotional center, you can generate, experience and express any emotion on demand at will. But normally we are triggered by the situation. उसने ऐसा किया इसलिए मुझे गुस्सा आया. उसने ऐसे किया तो मैं शांत भी हो सकता था. मेरी चॉइस थी. So stop blaming the situation, stop blaming the people for your emotions. Your emotions are getting triggered by you and you are not in an emotional center. That is why you are reacting. So can we understand this? Look into your life and see, are you getting triggered or are you in control of your emotion? Then that will tell you what is the level of emotional intelligence you are having. Right? Okay. Also, one more thing that I wanted to share was, what is your emotional center? This was a question which I wanted to actually discuss. We didn't land upon that discussion in the last session. So we'll take it up as a slide discussion today. So anybody who would like to share what all we have shared now, anything you want to share from your life, no theory. अपनी लाइफ में देखिए आपका इमोशनल सेंटर क्या है, आप लव के कौन से एक्सपीरियंस और एक्सप्रेस कर रहे हैं, कौन से फ्लेवर. yes Rupa, go ahead. You're on mute. Yeah, sorry. I just wanted to share something regarding my self-experience. Just I told you earlier with my manager and all. You know, I do understand कि गुस्सा नहीं करना, you have to first think, you have to control. But वो तो reflex action की तरह आता था. I mean, इतना दिमाग खराब करती थी वो. You couldn't even stop even if I was doing this spiritual thing or ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन की तरफ गुस्सा आता था उसके ऊपर कि शी इज डूइंग, मतलब कि गलत कर रही है वो. सो यू नो हाउ टू स्टॉप दैट काइंड, बिकॉज वो तो इंस्टेंट होता है रिएक्शन, यू नो. Okay, so I will answer. I've got your situation. I've understood your situation. I will answer this in a different way so that everybody can get some value out of it. Ready for it? Yeah. एक उदाहरण देता हूँ आपको. 2 बिल्डिंग हैं, ट्विन टावर्स हैं जी. एक बिल्डिंग पूरा खाली है और एक बिल्डिंग में पूरे एक्सप्लोसिव भरे हुए हैं. ओके, डोंट गो विद एक्चुअल स्टोरी ऑफ ट्विन टावर्स. 2 टावर्स हैं, सिमिलर हैं, एक में पूरे एक्सप्लोसिव भरे पड़े हैं और एक पूरा खाली है. ओके, नाउ आई गो एंड आई थ्रो ए लाइटेड मैचस्टिक इन बोथ द बिल्डिंग्स. खाली बिल्डिंग में क्या होगा? रूपा, दिस इज फॉर यू टू अंडरस्टैंड. खाली बिल्डिंग में क्या होगा? I have already understood what you're going to tell me. तो मैच स्टिक बाहर के लोग फेंक रहे हैं. बॉस ने ऐसे किया, पड़ोसी ने ऐसे किया, उसने गमला ऐसे रखा, उसने कूड़ा ऐसे रखा, बॉस ने डांटा, बॉस चिल्लाया, बॉस ने फाइल फेंकी. ये सब मैच स्टिक फेंक रहे हैं. अगर आप अंदर से खाली हो तो कुछ नहीं होगा. You will be at your emotional center. But if you are full of explosive, you will go boom, 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 boom. And then you will end up in ICU with a heart failure, with a stroke, and with a kidney failure. यही होता है ना, जब हमारे अंदर के एटम बम फूटेंगे तो यही होगा. तो प्रॉब्लम कहाँ थी? मैचस्टिक फेंकना उनके हाथ में है.
आपको अपने मेडिटेशन से, साधना से, स्पिरिचुअल साधना से अपने अंदर के एटम बॉम्ब को डिफ्यूज करके रखना है। ये तपस्या है. इट वोंट हैपन ओवरनाइट. Okay, most of us have awakened. Most likely, this is the first lifetime, possibly. For some, it could be the last lifetime. I don't know. So when you don't know, you keep walking on that journey without asking कितनी देर और करते रहो. जब तक सांस चल रही है करते रहो. Right? So it is an ongoing process. You have to understand that, and that is what we are going to look at today. How to actually take care of your emotional and mental well-being, mental health day. Remember, that is what we will be looking at. How can you actually handle that? But just to give you a comparison, this is what is life. Pressure cooker situation means you are full of explosives. Anybody can trigger you and you will go boom, boom, boom. Definitely. उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तुम माचिस की तीली फेंक रहे हो. Nobody is going to blame him. You are getting a heart attack. You better take care. तो अपने आप को खाली करना, इसी को बोलते हैं चित्त को खाली करना. किससे? अपनी साधना से. And when we do that meditation, when we do that breath work, which we learned in camp, in a big way, the spiritual breathing we learned, eight types of spiritual breathing we learned in the camp, meditation techniques we learned, Vipassana, great meditation technique. What is this doing? ये कर क्या रहा है? ये spiritual solution है to how to handle your emotions. आपके अंदर के चित्त को साफ कर रहा है. I hope everybody is getting it. Yeah, right. So big acknowledgement to Rupa first for bringing out this issue, and I hope this is clear to all the people who are full of emotions and living like a pressure cooker. You will explode any day. Better take care. You can't blame others. वो तो मैचस्टिक फेंकेंगे ही फेंकेंगे. आपका काम है अपनी साधना से अपने बॉम्ब्स को डिफ्यूज करके रखने. Right? Anybody else? What is that, Vijay ji? That is what was that, Vijay ji? कुछ नहीं. I was just typing out the answer to Devesh. Okay. So anything that you are doing for your spiritual journey is sadhana. Okay. तो आप चाहे उसमें भक्ति मार्ग में हो, ज्ञान मार्ग में हो, कर्म मार्ग में हो, कर्मयोगी हो, या फिर राजमार्ग पे, राजयोग में, यानी कि breath work, meditation, all this. Right? All right. Very good. Anybody else who has any question? Anybody else who has any question? Yes, Gunjan ji, go ahead. सर, ये चारों मार्ग जरूरी है कि चारों ही आने चाहिए कि एक ही मार्ग पकड़ सकते हो? कोई भी मार्ग पे चल सकते हो. It will call you. You will not decide. It is a soul calling. You will be called. जो कॉलिंग आती है तो संजीव और मैं भागते ही है ना विपासना के लिए. तो क्या है? You need to understand. ये मेडिटेशन का टेक्निक है. Right? So it will call you. You be aware and you be open and you be guided by the divine. If you are on the path, you will get guidance. You have to be open and alert to catch those signals and then take actions on that. Right? Okay. Like many people were aware of the Delhi camp. How many came? Only those who were bound to get transformed, they came. And Vijayji is itching to find the date of the Bombay camp, right? Vijayji कह रहे Bombay का camp का पूरा बताओ मेरे को जाना है, right? So like that, so it will call you. Spiritual journey is always a calling which the soul will get. You need to be aware of it, you need to be open for it, and you need to be exploring it. Okay. All right, good. So now we know how to handle the emotions. Now we come to the topic today. Mental health day की बात कर रहे हैं हम, love and fear की बात कर रहे हैं, right? So we know the basic emotion is love. And if love is not there in life, love experience नहीं हो रहा है किसी को, तो क्या प्रॉब्लम है? तो क्या प्रॉब्लम है? He is experiencing what? Fear. क्योंकि लव का ऑपोजिट स्पिरिचुअल लैंग्वेज में फेयर है. वैसे तो हेट्रेड मिलेगा आपको डिक्शनरी में, बट स्पिरिचुअल लेवल पे अगर आप देखें, एक्चुअली बीइंग लेवल पे, when I say spiritual level, I'm talking about the being level. We are a human being, so we have a being level. Being level पे love का opposite spectrum जो है वो fear है, but it is not actually opposite. It is absence of love. So it's like light and darkness. People understand light and darkness better. अगर मैं लाइट के सामने खड़ा हो जाऊं तो शैडो पीछे जाएगी, तो शैडो का एग्जिस्टेंस है? शैडो को कोई एग्जिस्टेंस है? नहीं, शैडो को कोई एग्जिस्टेंस नहीं है. लाइट का एग्जिस्टेंस है. Absence of light is shadow, darkness.
दूसरी जगह लाइट लगा लो तो वहां से लाइट आएगी तो इधर का शेडो चला जाएगा, खत्म हो जाएगा. तो शेडो और डार्कनेस इज ऑलवेज एब्सेंस ऑफ light. Similarly, any flavor of fear is a absence of love. You need to understand that. And self love हमने सुना हुआ है, तो love कहाँ से आता है? When you are operating from self. And fear कहाँ से आएगा? When you are operating from ego. So remember the story, white dog, black dog. As long as you are operating as a from the being of a white dog, you are operating from self, you will be full of love. And the moment you are operating from ego, there is no love. That means it is ego based in fear. So everybody clear on this level of understanding? ये clear है? Good. Yeah. So now the question is, if we want to remove fear, कहीं जगह पे हम इसके fear हो जाते हैं हमको, fear को हमको अगर remove करना है तो क्या करना चाहिए? Action. Action. Okay. तो fear का purpose क्या है पहले बताइए, because we understood ना, emotion का एक तरीका होता है, natural expression क्या होता है emotion को handle करने का. सबसे पहले तो हमको पर्पस समझना है, उस इमोशन का पर्पस क्या है. जैसे लव का हमने समझा, इट इज आवर बेसिक एसेंस, हमारा बेसिक नेचर है. सो वेदर यू लाइक इट और नॉट, यू आर बाउंड टू एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेस लव. फियर का पर्पस क्या है? Survival. सर्वाइवल, प्रिकॉशन. करेक्ट. सो फियर होगा तभी, शेर को देख के अगर आपको फियर नहीं लग रहा है तो आप मरोगे. तो सर्वाइवल के लिए आपको फियर आना चाहिए, एंड देन स्ट्रेस रिस्पॉन्स इज जनरेटेड इन द बॉडी एंड यू विल रन सो दैट यू कैन सेव योर लाइफ. So fear is important. Fear is not a unnecessary emotion. It's a very necessary emotion because it helps you to survive. वरना आप रेलवे लाइन पे खड़े हो जाओगे, आई एम द सोल, मैं अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ. रेलवे ट्रैक पे खड़े हो जाओगे इन फ्रंट ऑफ ए ट्रेन एंड यू नो व्हाट विल हैपन. तो आपको फेयर होना चाहिए कि बॉडी स्ट्रक्चर है, बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी ट्रेन के आगे. सो इट डजंट मेक सेंस. सो दैट फियर इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल. एब्सोल्युटली राइट विजय जी, सर्वाइवल जरूरी है, इसीलिए फेयर का पर्पस है. क्या करना है? प्रिकॉशन. ट्रेन आ रही है तो रेलवे लाइन से हट जाओ, ट्रेन चली जाएगी तो पैदल सीटी बजाते हुए चले जाना. मेकिंग सेंस? तो फेयर का पर्पस क्या है? प्रिकॉशन. प्रिकॉशन लो, एक्शन लो, और जैसे ही फेयर को हम ओवरकम करेंगे देन इट विल बी, you will experience what the other side of fear is. What? Again, love. So now you will be full of love and you will live. You will experience what? You will experience bravery, courage, fortitude, passion, जो भी आपको दिखाना चाहिए, like the soldier fighting at the border. तो फेयर की दूसरी तरफ, डर के आगे इसीलिए बोलते हैं डर के आगे जीत नहीं है, डर के आगे प्यार है. Actually, you go to the other side of fear, head and tails, it will be love. You have to go through the basic emotion of fear and then see. A couple of more things about fear. Anybody? There is a huge dichotomy about fear. There is a huge dichotomy. क्या है? सबसे पहले तो fear की definition है false evidences appearing real. 90% of your fears will never happen in your life. How many of you have experienced it? You write down your top 10 fears and you would feel that 9 में तो उसमें से हुए ही नहीं अभी तक. Right? So 90% of the fears will never happen in your life. And the balance 10% that actually happen, we think can make it happen. Because what you fear, you attract. तो थोड़ा सा ये controversial लगता है, but it is not controversial. It is actually the truth. What you fear, you will attract. You attract what you fear. जो हम डरते रहते हैं, हे भगवान ये ना हो जाए, हे भगवान ये ना हो जाए, वो हो जाता है. शेर आया, भेड़िया आया, भेड़िया आ ही जाएगा एक दिन. तो डर डर के हम उसको बुला लेते हैं. But in general, if you see, 90% of your fears will never happen because fears are false evidences appearing real. It's all an illusion. It's some concoctions of your mind. Doesn't work. जैसे अब अंधेरे में जाते हैं, सीढ़ियां उतरते तो क्या लगता है पीछे से अभी भूत पकड़ लेगा. आज तक पकड़ा है? नहीं पकड़ा ना. So you have to understand what is an authentic fear and what is a inauthentic fear. Inauthentic fear are imaginary. Authentic fears are the ones where you need to take the precaution and take action. Okay, so let's have some quick sharings and then I will request Sanjeev to take on the emotion of love and fear with respect to our mind. Let's hear what the mind coach has to say on this, right? But before that, anybody who wants to share on whatever I have shared till now?
शशिधर जी, completely as you rightly said, I mean जिस चीज के ऊपर आदमी फोकस करेगा उधर ही, I mean you are inviting the universe to make it real. Absolutely. That is why हम जिस चीज को डरते रहते हैं वो हो जाता है. Absolutely right. तो Right इसलिए understanding. इसलिए ये जरूरी है, सत्संग and everything, I mean focusing in the right direction is important. Absolutely. तो ये स्पिरिचुअल जर्नी में आपको साधना, आपकी सेवा, आपका सत्संग, दिस विल मूव यू फॉरवर्ड एंड दिस विल क्लींस यू फ्रॉम द सेम थिंग. द बिल्डिंग है, अंदर से खाली करना आपका काम है, कोई और नहीं कर सकता. ये चाहेगा तो भी नहीं कर सकता. Yes, but there are a few things that we can do along with the coaches or along with the healers. Like if somebody comes to me, so what do I do as a healer? Everybody knows, right? I do spiritual healing. So what do I do? Spiritual healing is basically cleansing the chakras, the blocks in your chakras. It is actually removing the, diffusing the bombs. तो स्पिरिचुअल हीलिंग से ये होता है कि आपके अंदर के जो बॉम्ब्स है, टाइम बॉम्ब्स चल रहे हैं, जिसका आपको पता भी नहीं है, कई जन्मों से चल रहे हैं, तो वो डिफ्यूज कर देते हैं. So that is one way of how you can move ahead in your spiritual journey and get over your problems of all the negative emotions and diffuse all the bombs. Simple. Take that visualization. आपकी बिल्डिंग अंदर से खाली करनी है. One aspect of that is spiritual healing, which I do, and which many healers can vouch for it, that they've got tremendous response from there. What we learned in the Delhi camp is also what? Spiritual breathing and meditation. Again, it cleanses you. So these are spiritual methodology, I would say, spiritual methods by which, or spiritual healing by which you can cleanse yourself. And cleansing your mind is the only priority that we have. बोलते हैं ना, उजले तन को साफ किया लेकिन मन की मैल न धोई. राइट? तो वो जरूरी है. मन की मैल धोने के लिए कोई साबुन नहीं मिलेगा, आपको ये साधना ही करनी पड़ेगी. वेरी गुड विजय. राइट, लेट्स एक्नॉलेज विजय जी फॉर दैट. यस टोनी, गो अहेड. दिस क्वेश्चन, व्हाट इज योर इमोशनल सेंटर, इस पे कोई बात नहीं हुई अभी तक. आप देखो, मैंने बताया ना आपने, जैसे मेरा इमोशनल सेंटर है हैप्पी एंड पीसफुल. If everything is fine, I will be operating from happy and peaceful state of mind. That is my being. I am a happy soul. I am a peaceful soul. So I come to that being. Then I can handle my life. So you see, what is your emotional center? For some, it could be, most of them, it is peace and happiness in general, which I have found. But it could be different. Because जब मेरा ये है तो मेरे को लगता है सबका यही होगा. But हर एक का अलग अलग हो सकता है. किसी का लव हो सकता है. हाँ, अनिरुद्ध जी कहाँ है? अनिरुद्ध जी नहीं है. वो बोलेंगे लव. आई एम ए लवफुल सोल. तो उनका इमोशनल सेंटर लव है. Could be, yes, possible. तो आपका सेंटर क्या है? देखिए, जहां से आप स्टेबल रहते हो, ये आपका घर है. This is your home. Emotional center is your home. So just look into your life, it will be clear. Otherwise, take it as peace. I'm a peaceful soul. That is good enough. I'm a happy soul. It could be one of these. Love, peace, and happiness. Possibly this is what is your center. So Tony, did you get some idea? Yeah. Got it. Yes. Acknowledge Tony. Good. Anybody else who has any question? Anything you want to share? परवीन जी कुछ शेयर करना चाहेंगे? After a wonderful camp, anything that you want to share? Like you said, even my center, I would always want to be in love, with love. Like I just want to feel each cell in my body full of love. This So is keep what I chanting that. want now. So if you want to get that emotional center, chant that, write it, feel it, imagine it, visualize it, and then it becomes your emotional center. That's how you create your emotional center. Right? Perfect. Very good, Praveen ji. Good job. Let's acknowledge Praveen ji for that. Yes, Devesh, you have raised your hand. Please go ahead. Devesh ji. Good evening, sir. हाँ जी बोलिए. नमस्कार नमस्कार. सर, मेरी वाइफ बगल में बैठी हुई थी तो उसने क्वेश्चन पूछा कि Voice is not. देवेश जी आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही है. आवाज आ रही है सर मेरी? आप आवाज आ रही है लेकिन क्लियर नहीं है मेरे ख्याल से. आपको भी नहीं आ रही है क्लियर? आप हेडफोन पे हैं या कैसे हैं? Echo कर रही है. स्पीकर पे सर. हाँ, कुछ इको हो रहा है पीछे. थोड़ा सा कुछ चेंज करके देखिए. आप माइक को ना मुंह के पास ले आइए. अब आ रही है सर? हाँ ठीक है, परफेक्ट. Yeah. गो अहेड.
मेरी वाइफ का क्वेश्चन था कि ये स्पिरिचुअल हीलिंग कैसे करते हैं, स्पिरिचुअल हीलिंग कैसे मतलब करते इसमें हैं? क्या एक्चुअल में किया जाता है। अच्छा, कोर्स करना तो पड़ेगा। इसके लिए आपको कोर्स करना पड़ेगा। बड़ा सिंपल है, मेरा हर सैटरडे को सेशन होता है, स्पिरिचुअल हीलिंग सिखाता हूँ लोगों को। तो आप उस कोर्स में आ जाइए, आप सीख जाओगे। 16 हफ्ते लगेंगे सर, मैं प्रोग्राम में कैसे बता दूं अभी। हाँ, लेकिन हाँ, तरीका ये है, अगर आप सिर्फ उसका प्रोसेस पूछ रहे हैं, तो जो भी हीलर है, ही कनेक्ट्स विद द डिवाइन मेरा क्वेश्चन नहीं एक्सेस। है सर, हाँ जी, सर मेरा क्वेश्चन नहीं है, मेरी वाइफ का क्वेश्चन है। हाँ नहीं, कोई बात वो नहीं, समझ बगल गया में मैं। बैठे हुए हैं। कोई बात नहीं। तो उनको बस यही बताना है कि जो भी हीलर होता है, जब वो हीलिंग करता है, वो डिवाइन के साथ कनेक्ट करता है, डिवाइन एनर्जीज को एक्सेस करता है, और फिर वो जिसको चाहे वो भेज सकता है हीलिंग, विच इज कॉल्ड डिस्टेंस हीलिंग टेक्निक्स। तो डिस्टेंस हीलिंग के टेक्निक्स होते हैं, टच हीलिंग के टेक्निक्स होते हैं, जो मैं अपने सैटरडे प्रोग्राम्स में सिखाता हूँ, जो मैं वैदिक हीलिंग और वेदांता विजडम प्रोग्राम करता हूँ। यहाँ पे बहुत लोग हैं जो कर रहे हैं और कर चुके हैं, राइट। तो उससे आप ये सीख जाओगे, उसके बाद आप खुद को और औरों को हील कर सकते हैं। तो ये स्पिरिचुअल हीलिंग का तरीका है, हाँ सर, क्योंकि राइट। सर उसको ये नहीं समझ में आ रहा ना कि आप उधर बैठे हुए हैं और इतनी डिस्टेंस पे कैसे हीलिंग की जा सकती है, वो उसका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है। अब जैसे आजकल देखिए, अगर मैं थोड़ा सा साइंस में बताऊं, टेक्नोलॉजी के हिसाब से बताऊं, आप पृथ्वी पे कहीं पे भी आजकल आराम से व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो। सही नंबर होना चाहिए उनका, किसी से भी कर सकते हो ना। बिल्कुल राइट। तो कैसे कर सकते हो, वो तो कितने किलोमीटर दूर है। एग्जैक्टली exactly. तो अगर साइंस तरक्की कर सकता है, तो डिवाइन का तरीका है, वो डिवाइन के तरीके है, तो उससे बढ़िया ही होगा ना, राइट। ये टेलीपैथी है, इसको टेलीपैथी बोलते हैं। बट देन दैट इज राइट। व्हाई इफ यू अंडरस्टैंड, मैं आपसे कुछ डिटेल्स लेता हूँ। क्या डिटेल्स लेता हूँ? आई आस्क योर नेम, राइट, एज, आपको डेट ऑफ फोटोग्राफ, बर्थ, फेस का फोटो, फोटोग्राफ, फोटोग्राफ, एंड एज एड्रेस, है एंड ना। अब एंड उस एड्रेस पे इस नाम का, इस एज का, इस फेस का एक ही बंदा होगा ना पूरे पृथ्वी पे। बिल्कुल तो मैं आपके बारे में सोचूंगा, तो आपको एनर्जी मिल जाएगी मेरी। इस तरीके से भेजा जाता, तो टेलीपैथी बोलते हैं इसे। ओके पर तरीके हैं, सिर्फ सोचने से नहीं जाएगा, उसके तरीके हैं। तो ओके बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो हम सीखते हैं, जिससे कि हम ये काम कर सकते हैं आसानी से, पर हो जाता है। जब साइंस इतनी तरक्की कर सकता है, तो डिवाइन के तरीके कुछ और ही निराले हैं, है ना। लेट्स एक्नॉलेज बिल्कुल देवेश जी, बिल्कुल। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, एंड आई थिंक इट वुड हैव आंसर्ड। मैंने नहीं पूछा सर, मेरी वाइफ ने पूछा। एक ही बात है, आपके विंडो से आया ना क्वेश्चन, तो आपने पूछा। बिल्कुल। ऑलराइट, लेट्स एक्नॉलेज। थैंक यू। गुड गुड। Okay. Any more questions? Anybody asking any question from me? Otherwise, I will request Sanjeev. Sanjeev, please take on and give your views on mental health. Whatever we can do on this, on as a mind coach, what is your views, your perceptions on this? Sanjeev, over to you. Thanks, Shashi. That was really a great point, because yesterday being a mental health day, so my only point which I would like to say is that at least आज के ज़माने में mental health को ignore करना सबसे worst part हो सकता है, because lot of time people ignore mental health. अगर हम body की health की बात करते हैं, हम financial health की बात करते हैं, तो how we should also talk, think and get engaged into mental health. अगर हम mental health day के ऊपर बात कर रहे हैं, because I am sure आप लोग ज्यादातर सबको मालूम तो होगा, I want to see your hands, आपको मालूम है कि हमारे फिजिकल बॉडी में जितने भी इश्यूज आते हैं वो माइंड लेवल से ही आते हैं. How many of you know this? Can I see your hand? So many of us know about this, और जिसको नहीं मालूम है वो मालूम होना चाहिए, and you have to accept this, and if you don't know, we can talk about that. Unless and until there is इमोशनल डिस्टर्बेंस, जो शशि ने बोला ना, इमोशनल सेंटर में डिस्टर्बेंस नहीं होगी, तो आपके किसी भी कंडीशन में आपका फिजिकल हेल्थ का कोई इशू आएगा ही नहीं. छोटा इशू छोटा डिस्टर्बेंस छोटा इशू, बड़ा डिस्टर्बेंस बड़ा इशू. फॉर एग्जाम्पल, लॉट ऑफ टाइम पीपल से मीठा मत खाओ, शुगर की प्रॉब्लम हो जाएगी. हम सुनते हैं नहीं ऐसी बात, यस और नो? बट व्हाट आई से, मीठा खाने से कभी भी शुगर नहीं होती है. मीठा शुगर के पेशेंट को, जो शुगर का पेशेंट है वो मीठा खाएगा तो उसके ब्लड शुगर का लेवल बढ़ सकता है,
बट मीठा, जिसको शुगर का इशू नहीं है, हाई ब्लड शुगर का, उसको मीठा खाने से इशू नहीं आएगा। ब्लड शुगर का इशू कब आता है? जब माइंड लेवल पे किसी को ये फीलिंग आ जाती है कि मेरे लाइफ से स्वीटनेस आउट हो रही है, मिठास निकल रही है, थोड़ी कम ज्यादा। अगर उसको बहुत ज्यादा बनाया तो उसकी उसी तेजी से बॉडी में ब्लड शुगर का इशू आना शुरू होता है। सो इफ आई जस्ट से सिंपल, द लाइन इज, हम जब इमोशंस की बात करते हैं, इमोशंस हमारे कहाँ होते हैं? सारे माइंड पे होते हैं। एम आई राइट? Yeah. जब इमोशंस माइंड पे है, सो कैन आई से दिस लाइन, माइंड इज ऑलवेज ओवर मैटर। माइंड इज ऑलवेज ओवर मैटर। एंड व्हेन आई से मैटर, मैटर क्या है? हम हमारी बॉडी, आसपास की जो चीजें हैं, जो हमारे सामने फिजिकल मैटर में दिखता है, वो मैटर है। So mind is always, always, always over matter, and that's how, अगर if you know, पुराने इस टाइम में बोलते थे कि सेजेस पानी पे चलते थे या अपनी बॉडी को ऊपर उठा लेते थे। हमें कई बार लगता है कि probably this is चमत्कार होगा। नहीं, this is possible and we all have that energy, but have we reached that level? So that is, I'm talking too big. जो आज शशि बात कर रहे हैं, इमोशनल सेंटर की बात करी, इमोशंस की बात करी, एनर्जी इन मोशन। अभी देवेश की वाइफ ने पूछा कि इतनी दूर से हीलिंग कैसे हो सकती है, राइट? तो सिंपल सी बात, अगर आप किसी भगवान की पूजा करते हो तो इतनी दूर से भगवान की पूजा कैसे कर सकते हो? सिंपल, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो आई वुड से सिंपली just think at the level ki my mind is the biggest creator. Shashi always says we are the god, we are the god. How are we god? We are god through our mind, and we can create anything in our life if we know how to use the power of mind. So Shashi, like Shashi healing karte hain. Ab Shashi is an expert in lot of sort of healing, karmic healing, conscious healing, Reiki healing, and a number of things. और इट इज, जो आप में से बहुत से लोगों ने शशि से हीलिंग ली भी होगी, बट अगर हीलिंग को पावरफुल बनाना है, हीलिंग को, शशि की तरफ से मोस्ट पावरफुल हीलिंग आ रही है किसी के पास भी, लेकिन आपको उसको पावरफुली रिसीव करना है, तो यू कैन ओनली गेट इट इफ यू एक्सेप्ट इट एट योर माइंड लेवल. Yes, Shashi is giving me healing and I am receiving it. Why I am saying this line? आजकल हीलिंग लेने वालों का एक प्रोसेस बन गया. जैसे कई बार होता है ना, घर में आप किसी की पूजा कर रहे हो, किसी कोई आपने पूजा रखी है, समथिंग रखा, आपने कोई सेलिब्रेशन रखा है, आपने पंडित को बुलाया, उसको 11,000 रुपए दिया, पंडित जी पूजा कर रहे हैं, मेरा काम हो गया. नहीं होता. Shashi, am I allowed to use some? Do you have 2 moments? Can I use an example? Yeah, sure. Go ahead. I talked to my mom कि हमने घर में मान के चलो कि माता रानी का चौकी रखी है, जागरण रखा है, होता है ना, हम रखते हैं ना ऐसा, या साईं बाबा की संध्या रखी, कुछ भी रखा है. Now what happened? आपने माता रानी को बुलाया या साईं बाबा की संध्या, स्टैचू रखा, सब कुछ करा. अब जैसे ही आपके गेस्ट आते हैं ना, आप उसमें से उड़ जाते हो, गेस्ट को डील करने लगते हो, वेलकम, मोस्ट, ये वो, उनको कुछ खाया नहीं खाया, वो पूजा चल रही है उधर. Why do you do that? I asked my mom. तो मॉम बोलती, गेस्ट आते हैं, गेस्ट को हैंडल, गेस्ट को इज्जत देनी होती है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन टू माय मॉम, ये आपने गेस्ट का डे रखा है या माता का दिन रखा है? कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? और जिसको आप जितनी इज्जत देते हो उस ड्यूरेशन में, वो आपकी लाइफ चलाता है. माइंड लेवल पे जो मेंटल हेल्थ पे बात करें, इट्स सो वेरी सिंपल कि, सो मॉम्स ने मेरे को काउंटर क्वेश्चन करा, तो गेस्ट है उनको छोड़ दें, उनको कोई वेलकम ना करें? वेलकम करो, आप मत करो. अगर आपने घर में रखा है, आपके इतने सारे घर में नोन पर्सन है, रिलेटिव्स है, नियर बाई फ्रेंड, उनको बोलो वो वेलकम करें. हो जाए क्या बात, आप जाके सबसे मिल लो. There is always a way. But why I'm saying this,
शशि ने हीलिंग भेजी और हमने सोचा हमारा काम खत्म हो गया, नहीं। माइंड लेवल पे एक्सेप्टेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आई यूज वन मोर एग्जांपल। हम लोग खाना खाते हैं फंक्शंस में जाके, कई लोग कंप्लेन करते हैं खाने के बाद, वहां का खाना कैसा था, मेरा तो स्टमक ही खराब हो गया, ठीक है, मुझे तो फूड पॉइजनिंग हो गई, ऐसी ऐसी बात करते हैं। हमें राइट और नॉट? होता है नहीं होता है? तो लोग बोलते खाना खराब था। मेरा क्वेश्चन आता है, अगर खाना खराब था तो जितने जनों ने खाना खाया सबकी तबीयत खराब होनी चाहिए, सबको फूड पॉइजनिंग होनी चाहिए, क्यों लिमिटेड लोगों को हुई? बिकॉज द फैक्ट इज वी शुड ऑलवेज ईट विद लव एंड ग्रेटिट्यूड। जिस खाने को हमने खाया, अगर आप फंक्शन गए, आपको खाना अच्छा नहीं लगा, आपको लगता है गुलाब जामुन ठंडे थे, ये क्या खिला दिया, मत खाओ गुलाब जामुन ना। खाऊंगे भी और हम बोलेंगे बेकार था, तो बॉडी में, माइंड लेवल से बॉडी पे इम्पैक्ट आता है। सो शशि, थैंक्स फॉर दिस टॉपिक टुडे। आई वुड से अपने आप में ओपन हो जाओ माइंड लेवल पे, आस्क योरसेल्फ, टॉक टू योरसेल्फ, दैट्स द बेस्ट वे टू टेक चार्ज ऑफ योर माइंड। रूपा सेड की मैनेजर आती थी, दिमाग खराब करती थी। मैनेजर का काम मैनेजर कर रही है, आपका काम आप करो। हमने कैंप में भी बड़ा अच्छा एग्जांपल सुना कि बीवी बड़े छान करती, बीवी ऐसी है, और बीवी ऐसी होती है या हस्बैंड ऐसा होता है, जो भी होता है, दिल में धड़कन भरी, कुछ हुआ, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने 20 mg की दवाई दे दी, आराम पड़ गया। अब 20 mg की दवाई दी और डॉक्टर ने बोला खाते रहो इसको रेगुलर। 1-2 साल के लिए आराम पड़ा, लेकिन बीवी बदल गई क्या? हस्बैंड बदल गया क्या? रूपा, यू आर ऑन म्यूट मोड। I just have one thing to answer, संजीव जी। Yeah. वो जो मैनेजर थी ना, वो मेरे पिछले जन्म का बदला ले रही थी। आपने का अकाउंट था। आप अपने कार्मिक पूरे खत्म करो ना, आप उसके बदले को बदला क्यों दे रहे हो उसको? दैट्स योर नथिंग, वी आर हो नॉट गया गोइंग इन बदला, डिटेल हो अबाउट। गया। हम लोग मैनेजर है, बट दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग। Yeah. सिमिलरली फाइनेंसेस, एक इंसान के लाइफ में फाइनेंसेस उतना ही रोल प्ले करते हैं जो आपके माइंड लेवल पे उसको लेके आपकी कंडीशनिंग है, प्रोग्रामिंग है। लोग बोलते हैं पैसा मुसीबत की जड़ है, तो व्हाई वुड मनी कम टू यू? This is all created by mind. To keep it very simple, my dear friends, be very aware what we are talking, what we are thinking. Okay, and then take charge of your life. That's how it is about all mind. As a mind coach, that's where I work at the subconscious mind level. Shashi, thank you very much for the opportunity. Let's acknowledge Sanjeev. Wonderful sharing. And it's been some time since I listened to you. Thank you so much, And Sanjeev ji. when Sanjeev is speaking, I actually, like, it's like a batsman who is at a non-striker and मैं यहाँ खुश हूँ, तू खेल. So it's like that with me. Anyway, so let's acknowledge Sanjeev once again. Wonderful. A couple of things which opened up for me, like I would like to share that what Sanjeev shared. तो जब हम actually जो भी हम लाइफ में जी रहे हैं या हम क्रिएट करना चाह रहे हैं, यू शुड ऑलवेज नो कि उसको कोई कॉन्ट्रास्टिंग थॉट हमारे माइंड में तो नहीं चल रहा। जैसे अभी संजीव ने कहा ना, मुझे बहुत पैसा कमाना है, बहुत पैसा कमाना है, बहुत पैसा कमाना, लेकिन पैसा बहुत बुरी चीज है। नाउ यू आर इन ट्रबल। अगर आपने कहा पैसा बहुत बुरी चीज है, तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अच्छे हो ना, अपनी नजर में तो आप अच्छे हो। तो अच्छे आदमी को बुरी चीज कैसे मिल सकती है? बुरा आदमी हो तो बुरी चीज मिल सकती है। सो यू विल ऑलवेज हैव ए थॉट कि अमीर आदमी बुरे हैं, जरूर टैक्स की चोरी करते हैं, जरूर गड़बड़ी करते हैं, तभी पैसा कमाते हैं। तो मैं अच्छा आदमी हूँ और मैं बुरे काम नहीं करूंगा, तो मेरे पास पैसा आएगा ही नहीं। आई एम नॉट अट्रैक्टिंग मनी। गेट माय पॉइंट? तो स्टार्ट लविंग मनी। मनी को गांधी जी के नोट की जगह पे आप उसको देख सकते हैं, लक्ष्मी जी का रूप है। धनलक्ष्मी है। नाउ स्टार्ट लव, फॉल इन लव विद द मनी। धनलक्ष्मी के साथ प्यार हो जाएगा आपको। नाउ यू लव मनी एंड यू लव योरसेल्फ। नाउ द इक्वेशन इज गुड। लव का अट्रैक्शन है। नाउ द लव विल अट्रैक्ट मनी। गेट माय पॉइंट? तो आपके थॉट्स क्या हैं, आपके परसेप्शंस क्या हैं, आपके बिलीव्स क्या हैं, ये आपकी लाइफ को लिमिट करते हैं। तो अगर लाइफ में कोई लिमिटेशन है, सी व्हाट इज द बिलीफ सिस्टम व्हिच इज रनिंग योर लाइफ, एंड दिस इज ऑल एम्बेडेड इन योर बिलीफ सिस्टम, इन योर माइंड। आपके परसेप्शंस कहाँ हैं? आपके माइंड में। करेक्ट?
This is very, very important. So what Sanjeev said, just to building on that, अपने thoughts, अपने beliefs, अपने perceptions challenge करिए उनको challenge करिए, और जब तक आप universal law पे नहीं पहुंच जाते, तब तक उसको challenge करिए. Universal law क्या है? If you ask me, there is a very important universal law, जो in fact अभी हमने camp में भी सीखा था. So it says thought, feeling, action. Thought, feelings and then action. That is the system. एक thought आता है, उसके बाद एक feeling body में generate होती है, which means obviously बीच में emotion है, तभी feeling generate होगी emotion. Emotion के साथ जो feelings body में generate होती है, उसके बाद action आता है. So you have to be very, very careful कौन से emotion आप generate कर रहे हो, and you are in full control to experience or express any emotion on demand at will. मैं पूरे डंके की चोट पे ये बोल सकता हूँ. And the more you are proficient in this, you will live a very powerful life, because then you can generate any emotion irrespective of the situation. कोई situation हो या ना हो. And I actually used to practice that. कैसे practice करते थे हम? संजीव is witness to that. हमको task दिया जाता था, homework, mirror exercise करो. Think of a most happiest moment of your life and bring that smile on your face. तो आपका चेहरा beam होना चाहिए with happiness and joy. And there is no reason it has not happened now. You think of it and then create it, and think of a bad incident and bring sorrow in your eyes, and then think of an angry upset incident and you are very angry, generate anger in your eyes, and eyes speak. जैसे हमारे बॉडी के सेल्स होते हैं वो बोलते हैं, वैसे हमारे आईज में से दिख जाता है, बाकी हैंड में दिखता नहीं है. हैंड में भी वही फीलिंग है. हाथ को भी गुस्सा आता है लेकिन हाथ में दिखेगा नहीं, हाथ उठ जाएगा लेकिन दिखेगा नहीं. आंखों में गुस्सा दिखता है, आंखों में प्यार दिखता है, आंखों में खुशी दिखती है. सो एवरी सेल इन योर बॉडी इज एक्सपीरियंसिंग दिस इमोशन. और जैसे हम इमोशन को रिप्रेस करते हैं या नेगेटिव इमोशंस आता है, दैट विल सेटल डाउन एज ए डिजीज, डिसईज. तो पहले हम डिसईज में होते हैं, उसके बाद वो डिजीज बन जाता है, एंड देन वी बिकम डिसीज्ड, राइट? सो द जर्नी इज फ्रॉम ईज. व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न, ही इज एट ईज, then slowly society makes him dis-ease, then he develops a disease, and finally past tense, he is diseased. So that is the journey of life. So break that journey, become a master of your emotion, become a master of your karma, become a master of your destiny, and that is when you will live a powerful life, right? So Gyan session itna hi hai. Let's have some sharings now. Yes, we still have some time, so let's have some sharing. Anybody who would like to share? Vijay ji, Paul ji, Vivek ji, अनिरुद्ध जी कहाँ? अनिरुद्ध जी हैं, बिल्कुल हैं. Yes, कौन बोलना चाहेंगे? Anybody who would like to share? Tony, of course. Tony, you can also share. प्रवीण जी, कोई भी, कोई सवाल पूछना चाहे, कोई शेयर करना चाहे. What opened up? Anything that you can have in your experience? Rajnish ji, welcome. I think you have joined here for the first time. Manisha ji, welcome. Jyoti ji, welcome. And Samsung SMA7 15F. ये कौन है? अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे? Please do that. Yes. Anybody? भाई आज इतनी शांति क्यों है? क्वेश्चन नहीं है, कुछ भी है. लगता है सारे माइंड के सारे वो ज्ञान अंदर जा रहा है, पूरा इम्बाइब हो रहा है. यस अनिरुद्ध जी, गो अहेड. आपको शेयर करना चाह रहे हैं? हाँ जी, बोलिए. चलो, कोई नहीं बोल रहा तो मैं ही बोल देता. वेलकम सर, बताइए. सर, मैं 2 मिनट लूंगा. लव तो बहुत पहले डिस्कस कर लिया है, डिवाइन से है या जो भी अपना सर्कल है. तो लव का तो वो तो डिवाइन और सर्कल तो एक है, लव उनके बीच की बात है. तो लव इज ए वेव्स कह लीजिए, एक ऑरा कह लीजिए, मतलब लव तो सब कुछ है. मैं जहाँ तक मैंने ऐसा है जो मानता हूँ, अब जो भी है मेरे लिए तो वो वर्ब भी है, नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है, सब कुछ लव ही है.
आपका सेकंड इमोशनल आगे सेंटर, बेस्ट वे टू से दैट इज माय इमोशनल सेंटर इज लव, व्हिच आई सेड। आपका तो इमोशनल सेंटर लव है, वो आई नो। क्या है, मेरा क्या है, हमें गॉड लाइक बनना चाहिए। गॉड का ही लव सेंटर लव है, तो जब उसका है तो हम क्यों नहीं रखें। उसी से लर्न करना है ना जी, तो उससे लर्न करेंगे तो। और उसका लव सेंटर है या जो भी है, इसका कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि ये यही हम सबको आपस में मिलाता है, चाहे फैमिली में हो, अपने सर्कल हो, डिवाइन हो, कहीं भी हो। नंबर 1। सेकंड आ गया है फियर का। फियर, मेरे हिसाब से फियर कब आता है, जब हम कोई गलत काम करते हैं, चाहे माइंड में करें या एक्शन में करें। तो उसका मैंने जो सोचा है कि भाई ये फियर को कोई हम प्रिकॉशन ही ले लें, कि कोई प्रिकॉशन ले लें जिससे फियर ना आए। तो मैंने जो सोचा कि 3 बातें बहुत जरूरी है लाइफ में, अगर उनको ध्यान रखेंगे तो फियर आने के चांसेस कम हो जाते हैं। एक तो ये है कि जो हमारा रूल्स हैं गवर्नमेंट के, कॉन्स्टिट्यूशन के, उसको फॉलो करना है। हम फॉलो नहीं करते हैं, गलतियां करते हैं, रूल तोड़ते हैं, तो फिर डर पैदा हो जाता है। एग्जाम्पल है, रेड लाइट क्रॉस की तो एकदम डर पैदा हो गया, अरे कोई देखेगा नहीं। तो आपको तोड़ने की जरूरत ही नहीं है, करप्शन करने की जरूरत नहीं है। करप्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउ नहीं है। करप्शन करेंगे तो डर भी लगेगा, अरे ईडी वाले आएंगे, सीबीआई वाले आएंगे, तो नो नीड ऑफ करप्शन आल्सो। सेकंड यह है कि हम कहीं भी जहां पर कंपनी में काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, हर उनके कुछ रूल्स होते हैं। कॉलेज में तो उस रूल्स को फॉलो करना है। प्रॉब्लम क्या होती है, हम एक छोटी सी कंपनी या 4 की या 5 की रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, फिर फियर पैदा हो जाता है। तो वो बहुत जरूरी है। तीसरा जो है कि जिस भी हम रिलीजन को, सेक्ट को मानते हैं, हर कोई ना किसी चीज को मानता है, तो उसको फॉलो करना है। अब फॉलो करने का मेरा मतलब है टोटल फॉलो करना है। बीच वो आप अपने आप जैसे मेंटर हैं, या जो जो पंडित जी हैं, या बुक्स बहुत मिल जाती हैं, उससे पता लग जाता है, या पेरेंट्स भी बता देते हैं कि भी क्या आपको रिलीजन को कैसे फॉलो करना है। जब रिलीजन को फॉलो करेंगे तो दूसरों से रिलेशन भी अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि फिर एक बार रिलीजन में आ गए, फिर आपको एंगर नहीं करना, कोई कंफ्लिक्ट नहीं करना, कोई ग्रीड नहीं करनी, नो ईगो नहीं करनी। वो भी एक आपके फेथ का, आपके धर्म का पार्ट है, उसको फॉलो करो। अगर तीसरा ये है कि अगर आपको कोई क्लियरिटी नहीं है रिगार्डिंग द रिलीजन, या उस पर आप कहीं, कुछ लोग होते हैं जो क्वेश्चन करते हैं, ऐसा क्यों लिखा है, ऐसा क्यों लिखा है, उसके लिए मैंने ये क्या सोचा कि अपने सेल्फ रूल बना दो। अपने सेल्फ रूल बनाकर जो आपको ठीक लगता है फिर उसको फॉलो करो। तो उसमें सेल्फ रूल बनाने में फायदा क्या होता है कि वी कैन डिलीट, वी कैन ऐड। रिलीजन के रूल है, उनको ना तो हम ऐड कर सकते हैं, ना डिलीट कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने केस में क्या किया है, मैंने अपने रूल बना लिए, तो आई एम हैप्पी, क्योंकि मुझे उन्हीं रूल पर चलना है, और आई एम सेटिस्फाइड विद दैट। बहुत बढ़िया। और इसके बाद जो डर का है, डर एक आता है, ये मैं ऊपर की बात कर रहा हूँ, थोड़ा फाइनल स्टेज की, कि डेथ से आता है। तो अगर आदमी लर्न कर ले कि डेथ से डरना नहीं है, तो वो तो फिर स्टेज ऊपर वाली हो जाती है, फिर उसमें तो फिर कोई इश्यू नहीं रहता डर का। जब डेथ से नहीं डरना, तो फिर, और डेथ से ना डरने के आपने भी पहले यहाँ भी डिस्कस किया है कई बार, कि डेथ से कैसे नहीं डरना है। जो आपने सैल्वेशन बताई है, स्टेज बताई है, मेडिटेशन है, ये भी वही प्रोसेस वही है कि हम उस प्रोसेस में जाए जहां डेथ से नहीं डरना है, जहां डेथ को पहले ही ऑब्जर्व कर लेना है कि डेथ आएगी तो क्या होगा। तो ये थोड़ी वेरी सी नाइस सर, बात की है। बहुत बढ़िया अनुरुज जी। लेट्स एक्नॉलेज अनुरुज जी। थैंक यू सर। वेरी गुड। तो तीनों पॉइंट्स जो इन्होंने बताए, बहुत बढ़िया पॉइंट्स बताए हैं, एंड आई होप एवरीथिंग इज क्लियर फॉर एवरीबॉडी। लास्ट में जो आपने डेथ की बात बोली, उसमें सिर्फ मैं इतना बोलूंगा, फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि लाइफ इज इटर्नल, ओनली द लाइफ फॉर्म इज एक्सपीरियंसिंग डेथ। यानी कि आत्मा, जिसको हम आमतौर पे बोलते हैं, ज्ञान में बोलेंगे, आपने ज्ञान में बोलेंगे कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, आत्मा को कुछ नहीं हो रहा है। तो लाइफ मतलब आत्मा ही हुई। तो लाइफ इज इटर्नल, आत्मा इटर्नल है, सिर्फ लाइफ फॉर्म चेंज हो रहा है। अगर ये अंडरस्टैंडिंग पकड़ लेंगे तो आपको ऑब्वियसली उससे, मौत से डर धीरे धीरे कम होगा। धीरे धीरे का मतलब क्यों है? क्योंकि आपको ये जीना पड़ेगा।
इस सत्य को समझना पड़ेगा, इसको अपने अंदर उतारना पड़ेगा, अपनी जहन में पूरी तरह से जब ये आ जाएगा तो आप बिल्कुल लीडर हो जाओगे। क्योंकि हर बेसिक फेयर, सारे फेयर की जड़ तो यही है ना, बॉडी कॉन्शियसनेस। दो कॉन्शियसनेस है, बॉडी कॉन्शियसनेस एंड सोल कॉन्शियसनेस। बॉडी कॉन्शियसनेस मीन्स मैं शरीर हूँ, सोल कॉन्शियसनेस मीन्स मैं आत्मा हूँ। यही जर्नी है पूरी स्पिरिचुअल जर्नी। किस कहाँ से कहाँ शुरू हो रही है? बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस में जाना है, यही स्पिरिचुअल जर्नी है। तो यहाँ पे फ्रीडम ऑफ फेयर ऑफ डेथ आ ही जाएगा। बहुत सही अनिरुद्ध जी, थैंक यू वेरी मच। ओके, एनीबडी एल्स हु वुड लाइक टू शेयर? ठीक है। और कौन बोलना चाहेंगे? मनीषा जी, आप शायद कुछ बोलना चाह रहे थे। मनीषा जी, यू केम, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, विच इज ओके, इन केस यू वांट टू शेयर समथिंग। नहीं, बोलना नहीं चाह रही थी मैं। एक्चुअली मैंने लेट ज्वाइन किया तो मैं प्रॉपरली सुन भी नहीं पाई आपका। अभी ज्वाइन किया मैंने, मुझे याद नहीं रहा था। ओके, तो दैट्स फाइन। तो आपको बस कोई मैं ये सवाल हो कहना तो चाह आप रही पूछ थी, सकते हैं। मुझे डेथ से डर नहीं लगता। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है जी। नहीं लगता तो बहुत अच्छी बात है। आप पर कभी शेर या हाथी के सामने जाके खड़े मत हो जाना बस। हाँ, तो डर लगे ना लगे, आपकी जान खतरे में आ सकती है। डर लगना इज जरूरी। कभी कभी जब हम लाइव सिग्नल देखते हैं ना, लाइव करंट, डो नॉट टच, हम कोशिश करते हैं चल छू के देखता, मजा आएगा। कभी किया? नहीं किया ना, क्यों? मालूम है मर जाओगे। हाँ नहीं, वो ठीक है, बट हाँ। नेचुरल डेथ की बात कर रही हूँ मैं नेचुरल नेचुरल डेथ की डेथ बात। कुछ नहीं होता है, नेचुरल डेथ कुछ नहीं होता है। डेथ इज यू आर लिविंग एंड सडनली यू आर फेस विद डेथ। ट्रक सामने से आ रहा है, अब आप क्या करोगे? छलांग मारोगे ही मारोगे, बचाना हाँ ही नहीं, है। वो ठीक है। यस यस। दैट इज व्हाट प्रिकॉशन। फेयर का पर्पस प्रिकॉशन है। इतना ध्यान रखेंगे अगर हम, एंड वी टेक द राइट प्रिकॉशंस, यू विल लिव अ लाइफ वेरी पावरफुली। यस, दैट्स ऑल वी नीड टू टेक केयर, नथिंग एल्स। करेक्ट? ओके। राइट। तो हाथी के सामने जाके ये नहीं बोलना मेरे को डर नहीं लगता। हाथी को नहीं मालूम है, मैं तो मैं भगवान हूँ, आप ही भगवान हो। हाथी को कुछ समझ में नहीं आएगा, वो कुचल देगा, है ना। तो आई एम गॉड इन द ह्यूमन फॉर्म बोल के हाथी के सामने जाओगे तो मुश्किल हो जाएगी। यू हैव टू अंडरस्टैंड, प्रिकॉशंस लेने हैं। आपके शरीर को बचाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए ये शरीर अत्यावश्यक है। दिस इज अ व्हीकल फॉर योर स्पिरिचुअल जर्नी। टेक केयर ऑफ योर बॉडी। इनफैक्ट, in a different context, it is said, our body is the temple of the living God, and I am the living God. Better respect your temple. True. Right? All right. Yes. Let's acknowledge Manisha ji. Very good. आ रहा हूँ अनिरुद्ध जी, 1 मिनट आ रहा हूँ। पहले जरा एक बार बाकी सबसे ले लूँ मैं शेयरिंग। ठीक है सर। Tony, Okay, anything sir. you would like to share? Tony, anything you would like to share? Pal ji, you had raised your hand. Yes, please go ahead. Hanji. Thank you so much. I was beautifully enjoying all the wonderful sharings you all were doing. And just a small thought came to me that one of the biggest fears for humans is the fear of public speaking. So I was just a little bit hesitant to speak today. But I just wanted to thank you all for this beautiful sharing. And I think today's lesson gives me 5 takeaways, which I'll just take a minute or two to share with you, because I think today's was a very good emotional compass that can teach us how to navigate the world of love and the world of fear. And you also covered a lot of emotional wounds that we carry, how to cultivate this love and then have a fulfilling life. So I think the very first thing that we spoke a lot about today was the emotions of how our thoughts, behaviors, even our physical health is affected. And I remembered a quotation. It says, "Dehi rog na lagai palle sab kich paaye," that our physical body will never be at ill health and we will have all the boons and the gifts in our life. But gussa manana handai, if we never bring anger into our emotional being of our life, Farida, bureda palakar, do even good for people who are bad to you. Because earlier the beautiful lady was giving her life story, but Farida Bureda Palakar Gussa Manna Handai. Fariji says, make sure you do even good for people who do bad to you. Don't be angry with them. And what is the benefit? Dehi Rogna Lagai, because it's not about the other person, but our emotions are going to affect us. They are going to be destructive. They are basically not going to help us, and we got to learn how to manage them effectively. So I think your idea of emotional intelligence and how we develop these skills was very important. And number two, I think I learned about the root of all fear is basically this idea of survival that you mentioned, and that limiting ourselves and taking risk and pursuing our dreams is equally important to living fulfilling
life, but let us not be caught down by fears, because many of them, like you said, are not really true. They are not really real. Number three, I think the healing power of love was what I understood from all the speakers who spoke before me today, that it is a powerful emotion and it can heal our emotional wounds. It can transform even our relationships, if I heard some of the beautiful gentlemen who shared about it. And I think on a bigger level, that will give us a peaceful and more loving world, since we are talking about a mental health day being yesterday. And I think we need to cultivate all types of love, including the most important one, I think you mentioned, called self-love, if I remember. I think it starts with self-love, and once we have that, then we can love others. Number four, you mentioned a lot about emotional intelligence and also the professional therapeutic ways and many modalities that are available to doing this. But I think the conclusion, what I take away from today's lesson, is that we have to create a life of love, because like you said, the absence of light is called darkness, and in the same way, the absence of love is what is all about fear. So when we take away the fear, we have practical strategies, like you mentioned, sadhanas and all the other different methods. And also, I think coming for these sessions every week is a very practical tool we have for free to learn how to cultivate love, remove our fears, align our thoughts, and live a life that is going to be very fulfilling. So I just wanted to take this opportunity to thank you all. Although, like I said, fear of public speaking is one of the biggest fear. I hope I did not make many mistakes. Thank you for this opportunity once again. Thank you, Ji. Wow, amazing sharing, Palji, wonderful. And for those who don't know, let me tell you, it is past midnight for him because he is in Singapore. So he is approaching the midnight, I suppose. So he is awake only for this session. So thank you, Palji, for your commitment and participation. Let's acknowledge him once again. Very All nice. right. Thank you. Very Thank good, you, Palji. Ji. Wonderful Thank you, Ji. summarization of the whole session that we had. I have nothing more to summarize, right? Okay, anybody else who has any question, anything you would like to share? और कोई बोलना चाहेंगे? देवेश जी? Yes, Gunjan, go ahead. I would like to answer Devesh's wife. अगर DHV में आ गए हो तो डिस्टेंस हीलिंग पे विश्वास रखना सीखो, हो जाएगा सब ठीक. Okay, that is the Gunjan. And log into www.divinehealingvalley.life. Oh yes, let's acknowledge Gunjan for that, because she is the one who very proudly created the website and has all the core members there. Amit ji is not here, otherwise you will find all four of us there. Sanjeev is there, I am there, Gunjan is there, and Amit ji is there in that website. So how many of you have actually seen the website? It is a huge, I can tell you, this is like a huge, you can say, hospital for mental health. Huh? You have all the healing modalities mentioned there in the website. You have Gunjan as a tarot card reader, Amit ji as a coach, emotional coach, and Sanjeev, of course, Sanjeev and myself, you have already heard about us. So anybody who is in trouble can be directed to that website, which has been beautifully created by Gunjan and her team, and it's a life-saving, solution to many people. So let's acknowledge Gunjan ji for that. Very good. Right. Anybody else who has any question? And I'm still not clear. ये Samsung SMA7 कौन है? अगर अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे? What's the name of that site? This is www.divinehealingvalley.life. Okay. Divinehealingvalley.life. You can type. Okay. Thank you. तो मनीषा जी, आप उसमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, नहीं हैं तो you can just type out your number in the chat box, or you can note down my number, right? Yeah. And then we can add you up in that group so that you will get all the details there. Yes. So Gunjan, what's your number? Yeah, you can note down my number, 98102 98102 92141. Is that okay? Okay. Thank you. Yeah. So you can send me a text message and I will add you in the group. Yes. So let's acknowledge Manisha ji for that and Gunjan ji for a wonderful answer and creation of the website. Yes. Anybody else? Otherwise, I come to Anirudh ji. Anirudh ji. Yes, go ahead. सर मेरा जवाब
ऑलरेडी आपने दे दिया है। कोई बात नहीं, दोबारा बोल इस सकते ग्रुप के लिए ठीक है, दोबारा बोल देता हूँ। जो मैंने जो अंडरस्टैंड किया है कि वो हर एक, अगर बंदा, हर पर्सन ट्राई कर सकता है उधर जाने के लिए। मैं जब जैसे बात किया कि डेथ से फियर नहीं करना है, तो वो कोशिश कर सकता है। वो भी वेल लिटरेचर में और बुक्स में बड़ा लिखा हुआ भी है और एक्सपीरियंस भी है, हो जाता है कि जब इसके लिए आपको वो जो आपने बताया था साल्वेशन वगैरह, उस पर जाना पड़ेगा। जैसे आपने कहा, वन हैव टू गो टूवर्ड्स बॉडी लेस, टाइम लेस एंड स्पेस लेस, तब वो फिर डेथ से डर लगना बंद हो जाएगा। यस, तो वो बात की स्टेज है। बिल्कुल है, बिल्कुल है सर। इसमें आपको प्रॉपर जो बोलते हैं ना, सरेंडर टू द डिवाइन, दैट इज ओनली वे। किस मर्जी तरीके से करो आप, योग मार्ग के किसी भी मार्ग पे चले जाओ। व्हेन यू वांट टू एक्सपीरियंस फ्रीडम फ्रॉम द फियर ऑफ डेथ, तो एक ही तरीका है उसका, आपको सरेंडर करना ही होगा डिवाइन को। अपने अंदर डिवाइन को इन्वोक करना पड़ेगा। बॉडी कॉन्शियसनेस से धीरे धीरे हटके सोल कॉन्शियसनेस पे जाना पड़ेगा। दैट इज ओनली वे। उसके लिए बहुत कुछ बीच में रास्ते हैं, जैसे बोलते हैं ना, डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए बहुत सारे जंक्शंस हैं। तो जंक्शंस क्या हैं, अगर आप पूछेंगे मेरे से, थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ मैं, जिनको बाकी लोगों को क्लैरिटी नहीं होगी, आपको तो मालूम होगा। तो बेसिकली यू हैव टू गेट फ्रीडम फ्रॉम योर डिजायर्स। बहुत बड़ी चीज है ये। आपके अंदर की जो इच्छाएं हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपके डिजायर्स हैं, उनसे फ्रीडम होनी चाहिए। मैंने बोला नहीं होने चाहिए, डिजायर होने चाहिए, लेकिन उस डिजायर से फ्रीडम होनी चाहिए आपको। So freedom from desires is one important thing. Second is freedom from suffering Can and you misery. explain that freedom of desire? From It is a freedom huge for topic. desire. Right now, I will just give you the topic. Think about it, and then we will take it up maybe in the next session or somewhere. हाँ? पर अभी इन्होंने बताया फ्रीडम फ्रॉम फियर ऑफ डेथ की बात कर रहे हैं। फ्रीडम ऑफ फियर ऑफ डेथ की बात अगर हम कर रहे हैं, तो उससे वो डेस्टिनेशन है, और स्टार्टिंग पॉइंट और डेस्टिनेशन के बीच में जो जंक्शंस आएंगे मैं वो बता। तो एक जंक्शन होगा आपको जहाँ पे अपने डिजायर्स से फ्रीडम एक्सपीरियंस करनी होगी। दूसरा, आपके सफरिंग्स और मिजरी जो हैं, उनसे फ्रीडम एक्सपीरियंस करनी होगी। ये आपको बताएंगे कि आप हाँ उस तरफ जा रहे हैं। जब तक डिजायर है, तब तक आपका फियर ऑफ डेथ रहेगा। जब तक आपकी सफरिंग और मिजरी है, आपका फियर ऑफ डेथ रहेगा। अगर आप बोलते हैं मैं डेथ से फेयर नहीं करती, तो वो थ्योरेटिकल हो जाएगा, प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल होने के लिए, प्रैक्टिकली फेयरलेस होने के लिए, यू हैव टू बी फ्री फ्रॉम योर डिजायर्स, you have to be free from suffering and misery, and this is what we actually teach in our Vedic healing and Vedanta wisdom program, which I'm sure Vijay ji remembers it. Many people have done it. So there is a whole learning that has to be imbibed to get to the freedom from death or fear of death. तो वो हमारा शुरू का अगर आपने प्रेयर सुना हो, तो उसमें हम क्या बोल रहे हैं? ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर मा अमृतम गमय. Please move me from the fear of death to the fearlessness of the soul consciousness. That is what we are talking. तो ये वेदांता का बेसिक प्रेयर है. Okay, so you have to move on your sadhana, and to be more precise, attend the Vedic Healing and Vedanta Wisdom program. You will get to know the technicalities of how you can move ahead. Yes. All right, Manisha ji. So I hope Anirudh ji also wanted to say the same thing. Let's acknowledge. Okay, so we have 8 minutes over time. Anybody who has any burning question? Otherwise, we will close the session for today. Anybody who wants to share the takeaway? Parveen ji, takeaway? क्या takeaway है? कुछ लेके जा रहे हैं? Fear of death. Fear of death. Freedom from fear of death. पूरा बोलिए ना, वरना fear of death लेके चली जाएंगे आप. No, I'm freedom from fear of death. हाँ, बिल्कुल. वो जरूरी है. I'm already feeling that. Very good. I don't have fear. That's it. Sadhana, सेवा, सत्संग, इसी को पकड़ना है. Let's acknowledge. Very good, Pavi ji. Good insight. And Manisha ji, good insight. This is what you need to do. Huh? So you have to move on the spiritual journey. Yes. Anybody else? Anybody else? Jyoti ji. Jyoti ji has not shared anything. Rajni ji, anything you would like to share? Shashi sir, I got one point. Sorry, yes. I'm talking from my wife's pad. अच्छा, अब वहाँ आ गए. मैं ये सोच रहा हूँ आवाज कहाँ से आ रही है. Is there any human being who doesn't have a desire on this earth?
I never said you don't have any desire. I said you should be Anyone free from who's the desire. devoid of desire. Sir, बात सुनिए. मैंने ये नहीं कहा कि you should not have any desire. I said you should be free from the desire. That means you should not be attached to your desire. Desire तो रखनी है यार, पूरी desires fulfill करिए ना. Desires को fulfill Okay. करने के लिए तो शरीर लेके आए हो. My second question is there any human being who's detached from desire? Of course, why not? There are so many. In कितने my चाहिए lifetime. आपको? इसी विंडो में दिखा दूं आपको. Shashi sir, okay. इसी विंडो में Okay. दिखा दूं आपको. Gunjan, how are you? No, Shashi sir. हाँ जी. No, whatever it is in my. I haven't ये seen रजनीश है, anyone. वहां से बोल रहे हैं. हाँ जी बोलिए. Okay. Yeah. So, I haven't seen. I mean, what you're saying is must be correct. Of course, you have the testimonials of the people who are detached from desire, but I'm yet to come across people who are detached from desire. So, but I am the one. Of course, So- it so must be let me- possible. There must be people. नहीं सर, आपके अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा लोचा है और कुछ नहीं है. बहुत इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है. Because I am not saying that I don't have any desire. If you ask me, शशिधर जी, हाँ जी. शशिधर जी, हमारे माइंड में लोचा है, तभी तो आप जैसे गुरु से हम जुड़े हैं. नहीं, आप सिर्फ समझ रहे हैं कि डिजायर नहीं होनी चाहिए. डिजायर तो होनी चाहिए. सारी डिजायर्स फुलफिल करो. मैं तो बोल रहा हूँ ना, चाहे वो हेल्थ में हो, आपको पूरी अच्छी सेहत के साथ आपको लाइफ जीनी है 100 साल तक. सचिन तेंदुलकर की तरह सेंचुरी मारिए और पूरे हैप्पीनेस के साथ जिए, पूरे हेल्थ के साथ जिए, पूरे वेल्थ के साथ जिए, खुशहाल मतलब फुलफिल्ड रिलेशनशिप्स एंजॉय करिए, सेंचुरी मारिए और खुश रहिए. क्यों नहीं? ऑल दीज आर डिजायर्स, फुलफिल इट. पहले लोग 300-400 साल जीते थे. आजकल हम 50 साल में हाय अब मैं क्या करूं करके पड़ जाते हैं नीचे. नो, make sure that you have a healthy body. Make sure, एक second Gunjan. Make sure you have a healthy body, you are living a happy life and you are enjoying fulfilling relationship. Fulfill all your desires. जो करनी है, world tour पे जाओ, सब कुछ करो. But, big but, do not be attached to the desire. Do not be attached to the result of your karma. That is a karma yogi, no? So you will learn more of that. Be in the program, you will learn more of that. And I'm sure you are the right candidate for my Saturday program. You're welcome. Thank you, sir. Thank you. Definitely will be. अगला बैच शुरू होने वाला है बड़ी जल्दी. I will let you know to join in. There are many people who are in the current batch. Who are there? Gunjan is one. Rupa is one. And there are many others who are not there. Jyoti ji is one. Okay, so all these are in the current batches. अभी के current batch में. तो जैसे ये बैच खत्म होगा, अगला बैच शुरू करेंगे. Vijay ji has already done it. Vijay ji has already done it. Today is our first day. Yeah. For Welcome. your Zoom meeting. Welcome. Okay, so you are welcome on every Wednesday, and as you are in the program, and we will definitely add you in the. Are you in the Wednesday group? Are you in the Wednesday group? Okay, No, so I will no. add you up there. तो आप एक काम करिएगा, अमित जी को डिटेल बता दीजिएगा, या मैंने नंबर बताया था, मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए. I will add you in the group, right? हाँ जी, मैंने मैसेज कर दिया आपको ऑलरेडी. अच्छा, very good. So I will add you up. Don't worry. आप उनका भी कर दीजिए, दोनों का अलग से ऐड कर दूंगा मैं. And then be here on Wednesdays. And of course, you will know when the next batch starts. Welcome to attend my Vedanta Wisdom program. You will love it. Shashidhar sir. Yes. Shashidhar sir. हाँ जी. जाने से पहले गाना तो सुनाएंगे ना? नहीं, अभी नहीं. वो जब मिलेंगे तब सुनाऊंगा. उसके लिए कैंप में आना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता. आएंगे. We are looking forward. Yes. And Sanjeev ji, I am also searching that Vipassana. Yes. We all will hire a bus and go to Vipassana. Don't worry. We have too many candidates today. We are having too many candidates in DHV. We'll book a bus and then go to Vipassana. धावा बोल देंगे सब, है ना? Okay, very good. So, you really sang very well. Huh? Let's clap for. आपने बहुत अच्छा गाया. बहुत अच्छा. Thanks to Gunjan ji to share. He was excellent. वो तो टोनी की गाइडेंस में, टोनी की गाइडेंस में हम आगे बढ़ रहे थे ना उसमें. So Tony, I think he has left. Otherwise, he would have done a closing 2 lines. He's an expert. शशि, मुझे लगता है स्कूल में मुझे इसलिए नहीं पता चला क्योंकि तू डरता रहता था मेरे से. Obviously, इतना डरा के रखा था, मेरी आवाज कहाँ से निकलेगी? By the way, those who don't know me, I mean, Rupa is my schoolmate from my school. So she's in US now, and
यस विजय जी बोलते बोलते रुक गए, कुछ बोलिए। नहीं, हाँ, मैं ये बोलना रहा था, खूबसूरत लड़कियों से हमेशा लोग डरते हैं, खास तौर से सेम क्लास वाले। अरे वो तो ओरिजिनल झांसी की रानी थी। गुंजन तो अभी बनी है ना। ये डीएचवी की झांसी की रानी, वो तो हमारे स्कूल की झांसी की रानी थी। उसके सामने Oh कौन my जाएगा? God. Anyway, so I think it is time to close. Lot of fun, lot of learnings. So we will close the session. Thank you very much. Enjoy a great day. Enjoy a great week. Until we meet next Wednesday. Aham Thank you, Brahmasmi. Sanjeev ji. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, Thank you. Gunjan Take ji. Thank care. you Good so night. much. Bye bye. Thank you, Chi. Good Bye. night. Bye.